Okay, so today we're going to start with exercise 1.2, question number 7. In question number 7, it says that represent the following rational numbers on a number line. First one, minus 8 upon 3. First, you have to convert this into the mixed fraction. So, how you convert this into the mixed fractions? It becomes one integer, sorry, when you divide 8 upon 3, 3 2s are 6, नीचे बचा 2. So this becomes 2 integer 2 upon 3. ओके, पर यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये हो जाएगा माइनस. ये नंबर किसके बीच में आएगा? ये नंबर बीच में आएगा -2 और -3 के बीच में. ठीक है, -2 और -3 के बीच में. सो व्हेन वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, here it is -2 -3. So there are three parts, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट, 1 2 and 3 पार्ट. ये हो जाएगा -2 1/3, -2 2/3. यहाँ पे आपका नंबर आएगा -8/3. I'll do the second one so that it is clear to you, but before this you write it down. Let us jump down to the second one. The second one on the number line is very easy. -3/7. Just pay attention. 3/-7 दिया गया है, लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा -3/7. ये आएगा किसके बीच में? 0 और -1 के बीच में. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन. 0 and -1. 7 parts we have to do. The first 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 parts. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, this is -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, and this will be your number. I hope this is pretty clear to you. Please write it down. Okay, the third one you can do it on your own. 4/5 comes between 0 and 1. Let us come down to the eighth question. The eighth question says that write the 5 rational numbers which are smaller than number 1. Question 8 says that -1 से अगर कोई नंबर स्मॉलर है तो वो सारे नंबर्स लिखे. Question is write 5 rational numbers which are smaller than -1. You can write -2, -3, -4, -5, -6. Simple. Smaller than -1. -1 से smaller है ये सारे numbers. Question number 9. Write 5 rational numbers which are greater than -3/2. -3/2 से greater होने चाहिए.
तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। प्लीज राइट इट डाउन। Today we are going to start with addition of rational numbers. I want everyone to pay attention. For example, if I have find the sum of rational numbers 6 upon 11 plus 3 upon 11. What will be the answer? Put in the chat box. Everyone is supposed to write the answer. What will be the answer? Exactly. 9 upon 11. Second question. 6 upon 15 plus minus 7 upon 15. What will be the answer? Very good. The answer will be minus 1 upon 15. Okay. Third question says that 6 upon minus 7 plus 8 upon minus 7, 8 upon 7. इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? पे अटेंशन, ये माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी, डिनोमिनेटर में कभी माइनस की साइन रह ही नहीं सकती है। तो -6/7 + 8/7 क्या होगा आंसर? डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का खाली आपको प्लस माइनस करना है। -6 + 8 क्या होगा? प्लीज पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। साइन ऑफ द बिगर नंबर विल कम, तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा, -6 + 8। Exactly. Very good. The answer is 2/7. I hope this is pretty clear. I want you to write along with me. Please be fast in writing also. Huh? Let us see the next one. If I say add 6 upon 39 and -4 upon 39. Can anyone tell me what will be the answer? The denominator will be 39 itself. Everyone has to put the answer in the chat box.
Okay, the answer will be 2 upon 39. Clear? One more question we'll solve. If we have minus 16 upon 9 and minus 7 upon 12. Minus 16 upon 9 and minus 7 upon 12. Here we have to take the LCM. LCM of 9 and 12. Can anyone tell me what will be the LCM of 9 and 12? Please put your answers in the chat box. The LCM of 9 and 12 is equal to dash. 108. Please don't unmute yourself. Every day the same thing I have to tell you again and again. Put your answers in the chat box. एक तो आंसर भी गलत देते हो और अनम्यूट भी करते हो. LCM is 36. देखो LCM ऐसे निकालते हैं. LCM is 36. अगर मुझे यहाँ पे 36 लाना है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? What do I have to multiply with 9 to get 36? 4. ऊपर 4 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 16 into 4. Minus 16 into 4. Minus 48 आएगा. वेरी गुड. प्लस 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करने का. ओके, सॉल्व दिस. गिव मी द फाइनल आंसर. Minus 64 minus 28 upon 36. Give me the final answer. Everyone has to answer in the chat box. Whole answer you give me. क्या लिखूं मैं पूरे का पूरा? I'm sorry, minus 64 plus minus 21. अब बताओ क्या आंसर आएगा? दोनों नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव में आएगा. माइनस 85 upon 36. This is your answer. Come down to page number 12, example number 2. Page number 12, example number 2. You can see example number 2 has these questions. Okay. So the few examples I'll give you on your own, and then you have to solve. Put the answers one by one in the chat box.
Please start solving. I'll not rub it. 8 sums are there. Please start solving and put your answers in the chat box. Quick. Everyone has to put the answer in the chat box. Quick. Put the numbers. Put the numbers also which you are solving. Don't just write the answers. The first answer will be 3 upon 7. The second answer will be 2 upon 18. The third answer will be 19 upon 15. Minus 5 upon 17. यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 22. यहाँ पे 2 अपॉन 9. यहाँ पे हो जाएगा minus 3 upon 20. And the eighth one will be 5.
13 upon 40. Here you can do the cutting. 2 ones are, 2 nines are. Here also you can do the cutting. Ones are, 11s are. Okay, how many of you got 8 out of 8, 7 out of 8, 6 out of 8? Put your mark score in the chat box along with your name. किसको कितने marks मिले? Put your name along with the chat box in the chat box. How many of you got right? Put your answers in the chat box. Very good. Come down to exercise 1.3 on page number 17. I want you to solve along with me. Are you ready? Let's begin. Page number 17, exercise 1.3. Chalo. Let's begin. Exercise 1.3, question number 1. Add. ठीक है. First one, 5 upon 8 and 3 upon minus 10. ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने किया था. ठीक है. Second one, minus 3 upon 10 and 7 upon minus 15. माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी. चलो एलसीएम लेते हैं. एलसीएम ले लो 10 और 15 का. कितना होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15? प्लीज पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. 10 और 15 का एलसीएम बताइए. Sir, 10 and 8. We are doing the second one. The first one already we did. Better pay attention what is going on if you are not able to pay attention. We are doing the second one already. First one you already did, I said. Second in 10 and 15. Don't unmute yourself. The LCM of 10 and 15 is 30. So what should be multiplied with 10 to get 30 over here? 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? 3. तो ऊपर मिल जाएगा -9. बीच में है प्लस. 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? 2. तो ऊपर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 -14. चलो -9 -14. -9 -14. What will be the final answer? -9 -14. The answer will be -23. Let us come down to the next one. 4 and 5/6. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आएगा. चलो 1 and 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा. मुझे यहाँ पे भी 6 लाना है, यहाँ पे भी 6 लाना है. 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा? ऊपर भी 6. 4 6 जा 24. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 5. फाइनल आंसर बता दो चलो प्लीज. फाइनल आंसर बता दो. Very good. Everyone is writing the answer. Very good. So answer will be 29/6. Okay. Let us come down to the fourth question.
15/-7 +8/3। माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी। एलसीएम 7 और 3 का कितना होगा? एलसीएम 7 और 12, हाँ 21। मुझे यहाँ पे भी 21 लाना है, यहाँ पे भी 21 लाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे? 3। ये हो जाएगा -45 प्लस, मुझे यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे? तो 21 आएगा नीचे, 7। 8 7 सर कितना होगा? 42। 56। ओके, चलो। -45 +56 हो जाएगा 11। आंसर इज 11/21।